Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. हम chapter number 15 कर रहे हैं मीडियम रॉबिन से, which is about the pathology of the GI tract. Oral cavity हम कर चुके. Today our topic is pathologies associated with esophagus. Esophagus is a simple tube और ये जो muscular tube है, it transfers the food particles from the oral cavity down to the stomach. So that's what the job of this tube is. और इससे एसोसिएटेड पैथोलॉजीज भी इसी नेचर की हैं. सो एक ग्रुप ऑफ पैथोलॉजी वो है फॉर एग्जांपल जो नॉन न्यूप्लास्टिक है, and the non-neoplastic pathologies include inflammation, infection, as well as reflux esophagitis या obstruction. जब हम रिफ्लक्स की बात करते हैं तो यू नो कि स्टमक के अंदर वी हैव अ लॉट ऑफ एसिड और ये एसिड समटाइम्स ऊपर इसोफेगस तक जाता है और इसोफेजियल म्यूकोजा को इरिटेट करता है. सो दैट्स कॉल्ड द रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस. एंड समटाइम्स देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन का प्रॉब्लम जिसकी वजह से फूड ट्रांसफर नहीं होता इनटू द स्टमक. सो दीज आर द नॉन नियोप्लास्टिक सिचुएशंस. और दूसरी पैथोलॉजी का ग्रुप जो है that is neoplastic. उसमें हम ट्यूमर्स की बात करेंगे. Okay, so esophagus developed from the cranial portion of the foregut. It is a hollow, highly distensible muscular tube that extends from the epiglottis to the gastroesophageal junction. So ऊपर ही जाता है up to epiglottis, नीचे आता है up to gastroesophageal junction. Okay, located just above the diaphragm. Acquired diseases of esophagus run the gamut from the lethal cancers to persistent heartburn, which is the gastroesophageal reflux. That may be chronic or incapacitating or merely an occasional annoyance. इनके बारे में हम पढ़ेंगे. सो बेसिकली पैथोलॉजी का बेसिक फंडा यही है कि हर ऑर्गन में यूजुअली यू कैन डिवाइड द पैथोलॉजी इनटू नॉन नियोप्लास्टिक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स एंड नियोप्लास्टिक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स. ओके, तो चले ऑब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं. बिकॉज इट्स अ ट्यूब, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इट्स अ ट्यूब जिसका काम है फूड पार्टिकल को ऊपर ओरल कैविटी से लेके स्टमक तक ट्रांसफर करना. सो अगर इस ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो ऑब्वियसली फूड ट्रांसफर नहीं होगा एंड दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम. तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है इट कैन बी एक्चुअली बिकॉज ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन और इट कैन बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन. यानी दिखने में ट्यूब खुली होगी लेकिन काम नहीं करेगी. लेकिन लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन. एट्रीजियास, फिस्टुलास, duplications में अगर फॉर एग्जांपल डेवलपमेंटली इसोफेगस ने डेवलप होना होता है एंड देन इसोफेगस के आगे एक ट्यूब होती है ट्रैकिया. सो समटाइम्स व्हाट हैपन कि ये जो इसोफेगस है ये इस तरह से यू नो फिस्टुलास एंड एट्रीजियास बनाती है कि देयर इज फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस कि ये इसोफेगस ऊपर से बनना शुरू हुई और नीचे ये जो इसोफेगस का निचला पार्ट है इट इज जस्ट अ ब्लाइंड पोर्शन लाइक दिस और ऊपर से इट्स अ ब्लाइंड पोर्शन लाइक दिस. सो इस केस में फूड पार्टिकल ने आगे ट्रांसफर नहीं होना. समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि ये इस तरह से नहीं होता बल्कि जो इसोफेगस का लोअर पोर्शन है फॉर एग्जांपल वो जाके ट्रैकिया में खुल जाता है. समटाइम्स इसका अपर पोर्शन ट्रैकिया में खुल जाता है. सो अगर ये इस तरह ट्रैकिया में खुल जाएगा देन दिस इज अ फिस्टुला. सो एट्रीजिया का मतलब इसोफेगस आगे से ब्लाइंड बंद है, एट्रिटिक है, एट्रीजिया है. फिस्टुला का मतलब किसी और कैविटी में ओपन हो जाएगा. सो दे कैन बी एट्रीजिया. दीज आर ऑल एम्ब्रियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिसमें इसोफेगस मैकेनिकली इस काबिल नहीं होगा कि फूड को ट्रांसपोर्ट कर सके स्टमक तक. ठीक है, एंड दे आर यूजुअली डिस्कवर्ड शॉर्टली आफ्टर बर्थ. यानी जब बच्चा पैदा होता है माँ ने बच्चे को दूध पिलाना है ऑब्वियसली और वो दूध उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहा है. सो देयर विल बी यू नो साइनोसिस एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. और अगर एट्रीजिया है तो ये बच्चा फौरन वॉमिट करेगा क्योंकि दूध नीचे स्टमक में नहीं जा रहा. एंड यूजुअली प्रॉम्प्ट सर्जिकल रिपेयर इज रिक्वायर्ड बिकॉज दिस इज नॉट कंपैरेबल विद लाइफ. अगर एट्रीजिया ऑफ इसोफेगस है, खाना आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा, द बेबी विल डाई. Absence or agenesis of esophagus is rare. यानी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल esophagus है ही नहीं, वो होती है लेकिन उसमें एट्रीजिया होता है, उसमें फिस्टुलास होते हैं, बनती है लेकिन कोई ना कोई abnormality has been reported. ये भी वैसे रेयर है, इतनी कॉमन नहीं है. Atresia in which thin non-canalized cord replaces the segment of the esophagus is more common. It occurs most frequently at or near the tracheal bifurcation, that's the location, and sometimes it opens up into bronchus or trachea as the fistula. So that fistula if the esophageal connection is with the trachea. Okay, this abnormal connection can result in aspiration, suffocation, pneumonia, severe fluid and electrolyte disbalance. क्योंकि आप देखें ना ये ट्रैकिया है जिसने लंग्स में जाना है, these are the lungs, और अगर इसमें esophagus आकर के खुल रही है तो contents of the esophagus will go into the respiratory system and you get all these things, pneumonia, fluid electrolyte imbalances and choking and respiration के problem, all these things. Okay, esophageal stenosis may be congenital or more commonly acquired. When acquired, the narrowing is generally caused by fibrous thickening of submucosa
and this is usually because of inflammation and persistent reflux. होता बेसिकली ये है कि इसोफेगस जो है, दिस इज द ट्यूब, इट्स ओपन, जिसमें से फूड पार्टिकल गुजरता है. यूजुअली एक्चुअली इट्स वेरी, इसका जो ल्यूमेन है वो ऑलमोस्ट क्लोज ही होता है, लेकिन जब फूड का बोलस गुजरता है तो ये ओपन हो जाता है. लेकिन अगर इसोफेगस में कहीं इस तरह का स्ट्रक्चर है, यानी कहीं से देयर इज नैरोइंग इन द इसोफेगस, सो दिस नैरोइंग इज नोन एज स्ट्रक्चर. और ये स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है इन टर्म्स ऑफ पैथोलॉजी कि देयर इज फाइब्रोसिस, देयर इज फाइब्रस टिश्यू अवेलेबल. और अगर फाइब्रोसिस होगी तो ये वाला पार्ट जो इसोफेगस का है वो प्रॉपर पेरिस्टालसिस नहीं कर सकेगा, फूड आगे प्रोपेल नहीं होगा, और इसमें बाजों का स्टेंट डालना पड़ता है, कोई एक मेटल स्टेंट, ताकि फूड पार्टिकल आगे की तरफ जा सके, ये जो ब्लॉकेज है वो खुल सके. अच्छा, ये स्टेनोसिस और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इज वेरी कॉमन, इट्स आल्सो कॉल्ड स्टेनोसिस. ओके, सो ये जो स्टेनोसिस है और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, इट इज ऑल्सो कॉमन बिकॉज ऑफ रिफ्लक्स प्रॉब्लम. इमेजिन एन इसोफेगस जिसके नीचे स्टमक है और रिफ्लक्स हो रहा है, तो बार बार ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बार बार एसिड एसिड एसिड, एंड दिस एरिया विल गेट फाइब्रोज्ड, और यहाँ पे स्ट्रक्चर और स्टेनोरिक एरिया डेवलप हो जाएगा, और फाइब्रोसिस की वजह से ये ब्लॉकेज हो सकती है. ओके, सो दीज आर ऑल दी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी मैकेनिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम है. मैकेनिकली देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, मैकेनिकली देयर इज फिस्टुला, मैकेनिकली देयर इज स्ट्रक्चर फॉर्मेशन. सो यू कैन एक्चुअली सी दैट ऑन बेरियम swallow और डिफरेंट डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिक इमेजिंग, यू कैन एक्चुअली सी दिस. एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसे हम नाम देते हैं फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन. फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जो इसोफेगस को अगर आप किसी भी रेडियोलॉजिक स्क्रीनिंग के जरिए देखेंगे तो वो फिजिकली बिल्कुल ठीक नजर आएगी, उसमें कोई मैकेनिकल इशू नहीं होगा, बट देयर इज डिस्टर्बेंस इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड इवन समटाइम्स लिक्विड टू द स्टमक. So this esophageal dysmotility interferes with the process and can take several forms, all of which are characterized by a discoordinated contraction or spasm by the muscular layer of the esophagus. Because it increases esophageal wall stress, a spasm also can cause a small diverticula to form. यानी esophagus के यहाँ पे इस तरह छोटे-छोटे diverticula जो के sometimes they bleed also. एक फंक्शनल प्रॉब्लम जिसका नाम है एकलेजिया, दिस इज वेरी कॉमनली टेस्टेड इन एग्जामिनेशन, इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सुनिए अब ये ट्रायड किस चीज का है. नंबर 1, देयर इज इनकम्प्लीट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन. सो जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है जो कि स्टमक में खुलता है, ये टाइटली क्लोज्ड होता है, सो इसकी रिलैक्सेशन इनहिबिटेड है, इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन. नंबर 2, there is increased lower esophageal sphincter tone. चूंकि इसकी रिलैक्सेशन नहीं हो रही तो इसका टोन बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से इट इज क्लोज्ड. एंड नंबर 3, ऑब्वियसली इसोफेजियल एपेरिस्टाल्सिस. एपेरिस्टाल्सिस का मतलब ये है पेरिस्टाल्सिस नहीं होती और पूरी जो फंक्शनैलिटी है इसोफेगस की वो डिस्टर्ब हो जाती है. इसोफेगस काम ऐसे करता है कि व्हेन फूड बोलस इसमें एंटर होता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको आगे पुश करते हैं, फिर और आगे पुश करते हैं. लेकिन अगर एपेरिस्टाल्सिस होगी, यानी कोई कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रही, तो फूड आगे मूव नहीं करता और फूड यहाँ इसोफेगस में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वी हैव डायलेटेड इसोफेगस. So primary achalasia is caused by failure of the distal esophageal inhibitory neurons, and by definition it is idiopathic. पता नहीं किस वजह से होता है. There are degenerative changes in the inhibitory neurons. तो inhibit करने वाला कोई नहीं है, तो यह हर वक्त contracted रहता है, और वो किस वजह से है we don't know. So that's the primary. But there are also some other diseases which are associated with the similar achalasia-like picture, such as infection with Trypanosoma cruzi, which is also called the Chagas disease. इसके इन्फेक्शन से भी there is failure of lower esophageal sphincter relaxation. तो सेम पिक्चर होती है जो achalasia के अंदर है. Duodenal, colonic, and ureteric meandric plexus also can be affected in Chagas disease. Achalasia-like disease may caused by diabetic autonomic neuropathy, sarcoidosis, amyloidosis, any other malignancy, and even polio. All of these can affect the lower esophageal junction, and they can all mimic the disease of achalasia, and this is all called the functional obstruction. यानी आप एक्चुअली अगर देखते हैं तो कोई खास फिजिकल स्ट्रक्चर, स्टेनोसिस, ये चीजें नहीं नजर आती, सिवाय इसके कि the tone of the lower esophageal sphincter is a little increased. सिर्फ ये एक फाइंडिंग है, but functionally the esophagus is not working.
Okay, the next word that you have to understand is the ectopia. Ectopia का मतलब है अगर कोई भी बॉडी का टिश्यू अपने ओरिजिनल जगह से हट के किसी और जगह है. So for example, अगर हम ectopic pregnancy की बात करते हैं, so it's a pregnancy which is not developing in the uterus, but it is developing, so say for example in the location fallopian tube के ampulla में. So fallopian tube is not the normal site for development of the baby. The baby should be developing in the uterus, but if it is developing in a site other than the normal site, this is called ectopic. तो GI tract में भी ectopia है. Ectopic tissues are common in the gastrointestinal tract. The most frequent site of ectopic gastric mucosa is in the esophagus. तो है esophagus लेकिन stomach का mucosa भरा हुआ है. तो ये mucosa यहाँ पहुंच गया. This is ectopic mucosa. Okay. Although presence of such tissue generally is asymptomatic, acid can be produced because सोचे ना कि ये stomach के अंदर जो एसिड प्रोड्यूसिंग म्यूकोजा है अब वो यहाँ इसोफेगस में पड़ा हुआ. तो इसोफेगस तो एसिड को झेलने के लिए बना ही नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे एसिड प्रोड्यूस हो रहा है. सो देयर विल बी प्रॉब्लम ना, कैंसर हो सकता है, बैरेट इसोफेगस, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ी देर में, राइट. सो if there is abnormal tissue at an abnormal place, this is called ectopia. Gastric heteropnea, small patches of ectopic gastric mucosa in the small bowel, particularly in the Meckel's diverticulum or colon. I mean simple thing है यार. गैस्ट्रिक म्यूकोसा बेसिकली कहीं भी इसोफेगस में भी जा रहा है और बॉबल में भी जा रहा है, मैकल डायवर्टिकुलम में भी जा रहा है. सो गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यू आर नास्टी. नाउ द वैस्कुलर, क्योंकि हेडिंग हमारी मेन क्या थी देखें, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स एंड वैस्कुलर डिसऑर्डर. अब वैस्कुलर डिसऑर्डर में एसोफेजियल वेराइसिस इंपॉर्टेंट है. देखो इसकी सारी स्टोरी का क्रक्स मैं आपको बता देता हूं. क्रक्स ये है, आई एम फाइंडिंग सम प्लेस टू ड्रॉ माई लवली ब्यूटीफुल डायग्राम्स. यही बना देता हूं फिर मिटा दूंगा. देखें बात यह है कि लिवर इज एन ऑर्गन जिसके अंदर पूरी जीआई ट्रैक्ट का, तो ये स्टमक है और ये रहा, ये स्टमक है, ये इसोफेगस है, एंड दिस इज द इंटेस्टाइन एंड देन also the pancreas and spleen. तो ये सारा GI का जो ब्लड है वो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा होता है, into the liver via the portal veins. और फिर ये लिवर में कुछ ना कुछ प्रोसेस होके it goes into the inferior vena cava and then to the heart. तो liver basically is the intermediate organ which receives blood from the GI tract. अब ये जो लिवर है, by these portal veins they also anastomose with the systemic vessel and there are some sites of portosystemic anastomosis. तो इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि जो पोर्टल वेसल्स हैं और सिस्टेमिक वेसल्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं. उनमें से I mean there are some locations in the body, one of them is esophagus. इस तरह there are other locations as well. So esophagus में systemic vasculature anastomose करता है with the portal. अब इसकी importance क्या है? Importance इसकी ये है कि if there is any problem in the liver, say for example cirrhosis, say for example hepatocellular carcinoma, so what will happen कि पोर्टल जो ब्लड है वो obstruct होगा, वो easily गुजर नहीं सकेगा लिवर में से और there will be back pressure building. तो ये जो esophagus की जो वैस्कुलेचर है यहां पर भी बैक प्रेशर आएगा और इट कैन एक्चुअली ब्लीड. सो ये जो सारा बैक प्रेशर का फिनोमिना है जो लिवर की खराबी की वजह से हुआ है, तो इसोफेगस में ब्लीडिंग होगी. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग एंड दीज आर नोन एज एसोफेजियल वेराइसिस. ओके, तो अब जरा इसको पढ़ लेते हैं. Instead of returning directly to the heart, venous blood from the GI tract is first delivered to the liver via the portal vein before it reaches the inferior vena cava. और इसी वजह से if liver is damaged then there is back pressure in the venous system of the GI tract. Diseases that impede the portal blood flow such as hepatocellular carcinoma, such as cirrhosis, fibrosis of the liver, which can lead to development of the esophageal varices and it can also sometimes lead to bleeding which may be life threatening. So that's an important point to remember. Okay, esophagus is a very very familiar and famous and important site of portosystemic anastomosis. One of the few sites where the splanchnic and the systemic venous circulation communicate is esophagus. ये बात हम कर चुके, varices की बात हम कर चुके, so this is not anything new. Okay. Now the clinical feature, varices often are asymptomatic, यानी लोगों में होती हैं, लिवर खराब हो रहा है, बैक प्रेशर जनरेट हो रहा है, लेकिन ये पता तब चलता है जब वो ब्लीड करती हैं, हेमेटोमेसिस होती है, and it can also lead to an emergency or death maybe. Okay. So varices, hypovolemia होगा, bleeding होगी, intraluminal bleeding यानी esophagus के अंदर bleeding होगी. So all these are serious stuff. तो ये जनाब थी सारी बातें about the obstruction and vascular problems of the esophagus. Okay. Then we have to talk about esophagitis. Esophagitis का मतलब है inflammation of esophagus. It can be because of mucosal injury
any laceration यानी कोई टीयर पड़ गया, कोई तोड़फोड़ हो गई इसोफेजियल म्यूकोजा में, या देयर में बी फ्रैंक इन्फेक्शंस की वजह से भी इन्फ्लेमेशन होगी. द मोस्ट कॉमन इसोफेजियल लेसरेशन इज नोन एज द Mallory-Weiss tear. और Mallory-Weiss tear इज अगर किसी को वॉमिटिंग है फॉर एनी रीजन, वो बंदा जो ऐसे करता है ना उल्टी करने के लिए जो प्रेशर लगता है उसकी वजह से there can be mucosal tear and those are known as Mallory-Weiss tears. Okay, normally a reflex relaxation of the gastroesophageal musculature precedes antiperistaltic contractile wave associated with vomiting. This relaxation may fail during the prolonged और जो muscle में very powerful contraction होती है, जो stretch होता है, that can lead to tears and hematemesis. The roughly linear laceration of Mallory-Weiss syndrome are longitudinally oriented, yani they're usually in the longitudinal direction along the long axis of the esophagus. The superficial tears are generally the ones which heal quickly, but there can be deep tears. Okay. By contrast, the severe transmural, yani puri wall of the esophagus se guzar rahe hain, such tears which are also called Boerhaave syndrome. So Mallory-Weiss tears can also lead to Boerhaave syndrome, which means that it's all across the esophageal wall there are tears. It can lead to spread of inflammation to the mediastinum, causing mediastinitis, and it requires immediate surgical repair. जहाँ से फटी है esophagus, उसको दोबारा सीना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा. Okay. Then there can be chemical and infectious esophagitis. Stratified squamous mucosa of esophagus may be damaged by a variety of irritants, including alcohol, alkalis, excessively hot fluid or food, or heavy smoking. Some pills also does this, particularly bisphosphonate. अगर ये बहुत ज़्यादा पानी के साथ न पिए जाएं, so they can also cause irritation to the wall of the esophagus. Okay, so they can all cause esophagitis, inflammation, और उसका clinical symptom presentation ये होगा. The patient will present with pain on swallowing. मैं पानी भी पी रहा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है निगलते वक्त, मैं खाना भी खा रहा हूँ, मुझे निगलते वक्त दर्द हो रहा है, and this is called odynophagia. Okay. Iatrogenic esophageal injury may be caused by cytotoxic chemotherapy. यानी आप पेशेंट, iatrogenic का मतलब ये होता है जो मेडिकली इंड्यूस्ड है, यानी आप पेशेंट को एक ड्रग दे रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ समथिंग और वो ड्रग जाके गड़बड़ कर रही है. Okay, the morphologic changes are non-specific, consisting of ulceration, acute inflammation, also sometimes chronic inflammatory cells. Irritation causes blood vessel damage, and that further leads to ischemic injury. So all these chemicals, all these drugs, they can cause inflammation in the esophagus. And it can also be because of infections. There are some infections we are known to cause infections in the esophagus. HSV, for example, herpes simplex, cytomegalovirus, for example. Also, candida. Candida ka agar infection hai, to think about immunocompromised status, okay? And sometimes you see inflammation in other systemic diseases, such as Crohn's disease. So, infection by fungi and bacteria can be primary or complicate a pre-existing ulcer. Non-pathogenic oral bacteria frequently found in the ulcer beds, while pathogenic organisms, which account for about 10% of the infectious esophagitis, may invade the lamina propria and cause necrosis of the overlying mucosa. So this is all the bad thing happening because of infection. Candidiasis is also common, but always think about immunocompromised conditions. Endoscopic appearance often provide a clue to the identity of the infectious agents if you are thinking of viral esophagitis. Herpes virus, for example, typically causes punched out ulcers. ऐसा लगता है कि let me see अगर डायग्राम पे क्लियर है तो मैं आपको दिखा दूं. Punched out ulcers इतना क्लियर नहीं है इस डायग्राम पे, so don't worry about. ऐसा लगता है किसी ने पंच मारा है और एक अल्सर बन गया है. Histologic analysis में फिर बहरहाल we reveal कि क्या है basically. By contrast, the cytomegalovirus causes shallower ulceration, but it's very difficult to tell just by looking at the biopsy, without even biopsy, just by looking at the ulcer कि वो किससे हुआ है. मतलब I avoid such guesses. It always has to be proven by either the histopathology of the biopsy or PCR or microbiological testing, okay, such as immunohistochemistry in the histopathology lab. So some infections can also disturb esophagus. Then is a very, very important disease to talk about, and this is called reflux esophagitis. Reflux esophagitis भी कहते हैं इसको, gastroesophageal reflux disease भी कहते हैं, which is more famously known as GERD. GERD is the gastroesophageal reflux disease. So either you call it GERD or you call it reflux esophagitis. होता इसमें basically ये है कि you have this beautiful esophagus, then stomach.
स्टमक कंटेन्स एसिड, दिस एसिड अगर ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का टोन ठीक ठाक नहीं है, या बंदा बहुत सारा खाना खा के रात को फौरन लेट जाता है, तो ये स्टमक का कंटेंट जो है इसोफेगस में चला जाएगा। इसोफेगस में अगर कंटेंट आएगा तो एसिड भी आएगा और इस एरिया पर इरिटेशन होगी, हार्ट बर्न भी इसको कहते हैं। सो आइदर यू कॉल इट रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, you call it gastroesophageal reflux disease GERD, or you also commonly call it, and this is known as heartburn। ऐसा लगता है सीने में जलन हो रही है। वो जलन इसलिए होती है बिकॉज ज़ाहिर है यार एसिड आया ना, एसिड है यार, इट्स इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक में कि इट्स जस्ट लाइक बैटरी एसिड, इतना हैवी एसिड है यार। रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द लोअर esophagus is the most frequent cause of esophagitis into the lower esophagus, okay? And most common gastrointestinal ailment with which patients present in the outpatient department in the US. It's very common in US. The association of clinical condition called GERD, the stratified squamous epithelium of the esophagus, is resistant to abrasion from food but sensitive to acids. अब ये मसले वाली बात है यार। मसले वाली बात ये कि सोचो ना, ये इसोफेगस है और ये स्टमक है। मैंने आपसे कहा है कई दफ़ा मेडिसिन पढ़ाते वक्त कि हमारी बॉडी कस्टम डिज़ाइंड है। कस्टम डिज़ाइन का मतलब ये है कि जिस पार्ट का जो फंक्शन है वो पार्ट उसी तरह से डिज़ाइन हुआ है। स्टमक इस तरह से डिजाइन हुआ है कि वो एसिड से प्रोटेक्ट हो सके। इसोफेगस एसिड से बचने के लिए डिजाइन नहीं हुआ, तो यहाँ डिफरेंट तरह की एपिथेलियम है, लेकिन जब बार बार एसिड इरिटेशन होती है तो यहाँ एपिथेलियम चेंज हो जाती है। इसको हम नाम देते हैं मेटाप्लेजिया, यानी स्क्वामस एपिथेलियम चेंज होकर गैस्ट्रिक एपिथेलियम जैसी हो जाती है। एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग बिकॉज ये मेटाप्लेजिया कैन लेटर ऑन लीड टू कैंसर फॉर्मेशन। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। जब ये मेटाप्लास्टिक हो जाता है यानी इसोफेगस की लोअर एपिथेलियम चेंज हो जाती है, तो अब हम इसे नाम देते हैं बैरेट इसोफेगस, और बैरेट इसोफेगस में कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो रिफ्लक्स गैस्ट्रिक juices is central to the development of the GERD. In severe cases, duodenal bile reflux may exacerbate the damage, but usually the gastric contents come into the esophagus. Okay, and as a result of this, let me see where is Barrett esophagus. Barrett esophagus का जिक्र आएगा कहीं ना कहीं भी थोड़ी देर में। GERD is a common between those who are over the age of 40. बच्चों में भी हो सकता है, बट ज्यादा कॉमन इसी एज ग्रुप में है। The most frequently reported symptom is the heartburn, dysphagia, खाने में मुश्किल, and less often noticeable regurgitation of sour tasting even in the mouth. ऐसा लगता है मुंह में भी कोई तेजाब आ गया है। Rarely chronic GERD is punctuated by attacks of the severe chest pain भी होता है sometimes. With the severity of the symptom is not closely related to the degree of the histologic damage. यानी एक ऐसा पेशेंट आपके पास आ सकता है जो कहता है मेरे मुंह में बार बार जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ तेजाबियत आ गई है। सीवियर सिम्टम्स है लेकिन हिस्टोलॉजिकली इसोफेगस इतना डैमेज नहीं है, एंड वाइस वर्सा कैन ऑल्सो हैपन। Okay, hiatal hernia is characterized by separation of the diaphragmatic crura and protrusion of the stomach into the thorax through the gap. अब देखिए ये आपका डायफ्राम है, इसमें से esophagus आ रही है और एब्डोमेन में स्टमक पड़ा हुआ है। समटाइम्स यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉब्लम इस तरह होता है कि ये जो स्टमक है ये निकल के ऊपर चला जाता है, herniate from the opening. This is called hiatal hernia. इसकी further details embryology में। There can also be a disease called eosinophilic esophagitis. It's a chronic immunologically mediated disorder that is being increasingly recognized these days. Symptoms include food impaction, खाना जमा है esophagus के अंदर, खाने में मुश्किल हो रही है, और GERD-like symptoms. The cardinal histologic feature is infiltration with the eosinophils. Their abundance can help to differentiate eosinophilic esophagitis from GERD. Eosinophils बहुत ज़्यादा हैं तो it's eosinophilic esophagitis. बहुत सारे disease के साथ associations भी हैं इसकी, but if there are more eosinophil, then you rule out GERD and Crohn's and other esophagitis. Endoscopically evident rings in the upper and mid portions of the esophagus may help to distinguish eosinophilic esophagitis from the GERD, because in GERD you see change of epithelium in the lower esophagus particularly. Patients with eosinophilic esophagitis are typically refractory to high dose PPI treatment. Proton pump inhibitor treatment हम यूज करते हैं अगर किसी में रिफ्लक्स डिजीज है, सो यू ट्राई टू लोअर डाउन देयर एसिड कंटेंट ताकि ये बर्निंग ऑफ इसोफेगस रुक सके, बट ये इजोफेनिक एसोफेजाइटिस में काम नहीं करता। मोस्ट पेशेंट्स आर एटॉपिक, इनको और प्रॉब्लम्स भी होते हैं सच एज एलर्जी, एस्थमा, उनमें फिर ये इजोनोफिलिक। सो इजोनोफिलिक एसोफेजाइटिस जो है इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन अदर एलर्जिक और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स एज वेल। Okay,
ये आ गया जी बैरेट इसोफेगस। में कब से कह रहा था कि वी विल टॉक अबाउट बैरेट्स इसोफेगस। सो बैरेट्स इसोफेगस इज बेसिकली अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रिफ्लक्स डिजीज एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाप्लेजिया within the squamous mucosa of the esophagus। तो बेसिकली बात सारी इतनी सी है कि ये esophagus है और ये स्टमक है, बार बार एसिड ऊपर जा रहा है, तो ये लोअर पार्ट ऑफ esophagus का जो एपिथेलियम है वो अब squamous एपिथेलियम नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है एंड देन it is known as metaplegia, obviously intestinal, because it converts into gastric and intestinal mucosal type। और ये अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है वेस्ट में, तो particularly the incidence of Barrett's esophagus is rising। और इसकी इंपॉर्टेंस सारी ये है कि देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग एडिनोकार्सिनोमा। वैसे इसोफेगस की जो एपिथेलियम है वो स्क्वामस है, तो इसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, लेकिन अगर बैरेट्स इसोफेगस है किसी को रिफ्लक्स डिजीज की वजह से, देन देयर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग एडिनोकार्सिनोमा। ओके, एंड इट फॉलोज अ सीक्वेंस, मेटाप्लेजिया होता है, फिर डिस्प्लेजिया होता है, एंड देन ट्यूमर्स डेवलप। बट एनीवेज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि बैरेट्स इसोफेगस increases the risk of development of adenocarcinoma। इसीलिए ये जो GERD है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GERD से होगा बैरेट और बैरेट से होगा adenocarcinoma, all very serious। Diagnosis of Barrett is usually prompted by GERD। अगर किसी को GERD है तो आप ऑटोमेटिकली ये सोचेंगे कि उसका इसोफेगस भी चेंज हो रहा है नीचे से, जो उसका लोअर पोर्शन ऑफ इसोफेगस है, और उसमें कहीं बैरेट इसोफेगस तो डेवलप नहीं, और यू शुड डू लाइक एंडोस्कोपी एंड स्टफ एंड बायोप्सी टू सी कि उसमें मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया तो नहीं है। और अगर डिस्प्लेजिया है देन दिस इज अ प्रॉब्लम, और इट इज एन इंडिकेशन कि इट इज डेवलपिंग टुवर्ड्स ट्यूमर फॉर्मेशन। Dysplasia is often treated, and more advanced lesion, including high-grade dysplasia, intramucosal carcinoma, always require therapeutic intervention. Or sometimes, I mean, if it is advanced and the cancer is already there, you see what we do? Esophagectomy, esophagus निकालनी पड़ती है, followed by radiotherapy, ablation, chemo, all sort of different therapeutic approaches that we can use. So very, very serious stuff of esophagus, Barrett's esophagus because of GERD। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, वेस्ट में GERD का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए बैरेट्स का इसोफेगस बहुत ज्यादा है, इसीलिए एडिनोकार्सिनोमा का इसोफेगस में इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। सो ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इसोफेजियल ट्यूमर्स, यानी कौन कौन से कैंसर्स हैं जो इसोफेगस में होते हैं। अभी पिछले सारे डिस्कशन में जो इस वीडियो में मैं कर रहा था, वी डिस्कस्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ कैंसर्स। वन इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा व्हिच इज वाइडली वेरी वेरी कॉमन, but the incidence of adenocarcinoma is also increasing। जैसे बात यह है कि esophagus की जो लाइनिंग है वो तो स्क्वामस एपिथेलियम है, तो इसीलिए इसमें जो ट्यूमर बनेगा वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बनना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इसोफेगस में ये रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, तो ये जो लोअर इसोफेजियल वॉल है इसमें स्क्वामस एपिथेलियम रहती नहीं है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बन जाती है स्टमक और इंटेस्टाइन की तरह। इसे हम कहते हैं मेटाप्लेजिया, या इसे हम कहते हैं बैरेट्स इसोफेगस। और ये बैरेट्स इसोफेगस जिसमें मेटाप्लेजिया हो चुका है, वन टाइप ऑफ एपिथेलियम इज नाउ चेंज्ड विद द अदर टाइप ऑफ एपिथेलियम, इट नाउ लीड्स टू डिस्प्लेजिया, और डिस्प्लेजिया के बाद एडिनोकार्सिनोमा। सो एडिनोकार्सिनोमा इसोफेगस में जो हो, इसोफेगस ग्लैंड नहीं है, आपको पता है कि एडिनोकार्सिनोमा ग्लैंड्स में होता है, इसोफेगस तो ग्लैंड नहीं है, लेकिन ये ग्लैंड बन जाता है बिकॉज ऑफ GERD। So GERD is a very bad phenomena। इस GERD की वजह से एडिनोकार्सिनोमा, और चूंकि GERD का इंसिडेंस बढ़ रहा है, एडिनोकार्सिनोमा का इंसिडेंस भी वर्ल्ड में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, सो ये दो तरह के कैंसर्स हैं, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बिकॉज इसकी एपिथेलियम स्क्वामस सेल है, एंड एडिनोकार्सिनोमा बिकॉज यहाँ पे बैरेट इसोफेगस बनता है। सो एडिनोकार्सिनोमा typically arises in the background of Barrett esophagus and long-standing GERD। The risk of development of adenocarcinoma is greater in patients with documented dysplasia। अब ये सारी बात पढ़ने की मेरा नहीं ख्याल जरूरत है। वेस्टर्न कंट्रीज में चूंकि GERD बढ़ रहा है इसीलिए एडिनोकार्सिनोमा बढ़ रहा है। And what happens at the molecular level? Molecular studies suggest that the progression of Barrett esophagus to adenocarcinoma occurs over an extended period of time। Obviously, it's not going to happen in one day कि आज Barrett's हुआ और कल adenocarcinoma हो गया। This model is supported by cancer में तो time लगता ही है, cancer never happens overnight। Dysplasias होते हैं, फिर invasive carcinoma, mutation of tumor suppressor genes, all these things happen in adenocarcinoma of esophagus as well।
Clinically, the patient presents with pain and difficulty of swallowing. So these are general features of esophageal cancer. यही features squamous cell carcinoma के patient में भी होंगे. Weight loss, chest pain, difficulty in swallowing, all these things. By the time signs and symptoms appear, the tumor usually has invaded. This is a very dangerous thing. जब तक पेशेंट आता है क्लिनिक में, उसको खाने पीने में मसला होता है, तब तक बात हाथ से निकल गई होती है. इसीलिए इसका जो 5 year सर्वाइवल है, इन वेरी फ्यू पेशेंट्स इट्स 80%, अदरवाइज इट्स लेस देन 25%. सो इट्स अ पुअर प्रोग्नोसिस ट्यूमर, क्योंकि बाय द टाइम गेम हाथ में आती है, गेम समझ में आती है, बहुत देर हो चुकी होती है. आ रही बात समझ में? लेट्स देन टॉक अबाउट द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज अभी तक भी बाज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में दिस इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द इसोफेगस, बट समटाइम्स बाज डेटा को देख के ऐसा लगता है कि एडिनोकार्सिनोमा इज पिकिंग अप, इट्स बिकमिंग इक्वली कॉमन. In US, the esophageal squamous cell carcinoma typically occurs in adults older than 45 years of age and affects male 4 times more commonly than females. Risk factors are tobacco, poverty, okay? Listen, because then you are eating different things which are properly, which are not healthy or organic. Perhaps they contain chemicals which can, damage the esophageal mucosa. Caustic injury, because of any alkalis, achalasia, Plummer-Vinson, these are all the risk factors, okay? It is nearly 6 times more common in African Americans than in whites. So that is again a very striking risk disparity that cannot be accounted for by the differences in the rate of alcohol and tobacco. So all these risk factors you should be knowing: alcohol, tobacco, different races, different diseases, okay? The incidence of squamous cell carcinoma in the esophagus can vary by more than 100-fold between and within the countries, or within the country within different parts of the country it is different. The countries with highest incidence include Iran, Central China, Hong Kong, Argentina, Brazil, South Africa. Also in our countries like India and Pakistan, the incidents are on the uprise. Particularly in Pakistan, there is a province called Khyber Pakhtunkhwa where they eat a lot of, mutton or lamb meat and red meat barbecue. Red meat barbecue is their favorite, and they eat hot red meat barbecue and hot beverages. So these are also known risk factors for esophageal carcinoma. Okay. Now, pathogenesis. The majority of the esophageal squamous cell carcinomas in Europe and US are at least partially related to alcohol and tobacco. So these are at the core of the disease pathogenesis. However, esophageal squamous cell carcinoma also is common in some regions where alcohol and tobacco are uncommon. इसका मतलब इसके और भी कोई दूसरे problems हैं, nutritional factors हैं, जैसे अभी मैं ये red meat barbecue, hot beverages बता रहा था. बिल्कुल ऐसे ही exposure to polyacrylic hydrocarbons, nitrosamines, red meat barbecues, mutagenic compounds such as found in the fungus contaminated food, all these are risk factors. HPV infection is also a risk factor for esophageal cancer. Okay, clinical features वही होंगे जैसे अभी हम बात कर रहे थे. एडिनोकार्सिनोमा के लिए there will be difficulty in swallowing of the food, dysphagia or adenophagia, painful swelling, obstruction, weight loss and all these things. Extreme weight loss and debilitation may occur as a consequence of both impaired nutrition. बंदा खाना ही नहीं खा पा रहा, इसोफेगस में मसला है, तो स्टंट डालते हैं बाज़ औक़ात खाना पास करने के लिए. और weight loss is also associated with tumor associated cachexia. Overall body का metabolism ऐसे होता है कि there is extreme weight loss. Occasionally, squamous cell carcinomas of the upper and the middle esophagus present with symptoms caused by aspiration of the food via fistula. So जब कैंसर डेवलप होता है ना, तो जो वॉल ऑफ द ऑर्गन है, इट बिकम्स वेरी फ्राइबल, इट बिकम्स वेरी फ्रेजाइल. आगे इसके ट्रैकिया गुजर रहा है तो समटाइम एक फिस्टुला बन जाता है बिटवीन द esophagus and trachea. So that's also not uncommon. Increased use of endoscopy screening has led to earlier diagnosis of these tumors. Early detection is critical because 5-year survival rate are 75% of the patients जिसमें early diagnosis है. The overall 5-year survival remains dismal 9%. So it's not a good prognosis tumor. Esophageal cancers are bad prognosis tumors. Squamous cell में overall survival 9%. Adenocarcinoma फिर इससे बेहतर था. It was around 25%. Okay. तो इसका मतलब क्या होता है 5 ईयर सर्वाइवल का? इसका मतलब ये होता है कि 9% चांसेस हैं कि ये 5 साल में ये पेशेंट जिंदा रहेगा. दैट्स व्हाट इट मींस. ओके, सो वेरी लो चांस कि पेशेंट जिंदा रहेगा 5 साल में.
So that's all about the diseases of esophagus. आपसे next वीडियो में मुलाकात होगी which will deal with the diseases of stomach. So तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Take care of yourself.